नई चीज है तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स काफी सारी अनफोर्सीन वाली भी होनी थी जो हो रही हैं, बट स्लोली स्लोली सब छटती जा रही हैं। एंड आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन वाइज एंड एवरी विच वे ठीक होता रहेगा। और बट अब हमारा सबका एक्चुअली एक जितने भी ओनर्स हैं 9 के 9 या 10 थे थोड़े साल एक 8 महीना पहले, नहीं अभी ऑफिशियली वी आर स्टिल 9 मेंबर्स इन IPL. And I think, inshallah, it will remain so also. But I think we all have a more active participation because we are also learning in the last 2-3 years. We've also figured out some local issues, and everybody's bringing that to the front. And yeah, but to be on the board and stuff is a very big decision. I think that is an answer that I really cannot get into. जो प्लेयर्स IPL में खेले थे वही टीम, वही 15 या 16 जो 4 टॉप टीम में आई है, हम उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते चैंपियंस लीग में, उनको चेंज नहीं कर सकते, नए प्लेयर्स नहीं खरीद सकते। तो वो एक बाइंडिंग है कि वही 16 या 18 प्लेयर्स रहते हैं, 16 एक्चुअली वही प्लेयर्स शायद रहते हैं, राइट? 15 सॉरी, नॉट इवन 16, 15 उसके अंदर, बिकॉज इतना फिक्स्ड है 15, IPL के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इंजरी को चेंज कर सकते हैं और ऑक्शंस भी होते हैं। सो चैंपियंस लीग में क्योंकि सिर्फ 15 होते हैं, उसके अंदर एक साइड रूल है पहले से, सो इट्स नॉट अगेंस्ट द रूल्स। अगर अनअवेलेबिलिटी है द 7 नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर्स की, सो यू कैन play a foreign player only till such time that the Indian player recovers from the injury. Sometimes that ये जो लोगो है टी शर्ट पे ठीक नहीं आता, हेलमेट पे अच्छा नहीं लगता, so all those studies over the last 2-3 years have been done. What colors suit? We have wonderful set of sponsors who have been sticking with us for the last 4 years. How does it accentuate their presence onto our team? So all those things kept in mind. क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था, इस साल मिला और पिछले 2 साल से जय ट्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसको जो है थोड़ा सा और ऑर्गेनाइजली एंड सुंदरता से करेंगे. And I think that's the reason. It's not that we've changed it, and hopefully this will stick on longer. And my personal favorite, purple, तो अब रहेगा ही. इस साल तो यूसुफ बनेगा डॉन हमारा, इसको कोई पकड़ कर दिखाए जितने रन मारेगा इंशाल्लाह. लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, आई थिंक हम लोग जो है एक फैमिली जैसे हो गए और बहुत प्यार और खुशी से रहते हैं. बाहर हम आकर यहाँ पे मजाक करते हैं और सबसे कैजुअली बात करते हैं, but genuinely we believe that we are working on this team, Kolkata Knight Riders, as a family, and extend it beyond the borders of our own state, gone to Bengal and doing it. So a lot of love, a lot of goodness has been given to us in the last 4 years, and we really feel that we need responsible, that we really need to take it forward like one family. Juhi, not only as a friend, her mother, her brother, her whole family, Jai Bhai now, all of them have looked after me and they've been very kind to me. And we are, I think, very, very close friends. And I've told her never to leave my side, even if I misbehave publicly sometimes. So she said, okay, even if you misbehave and you're not well-mannered, we'll still be nice to you. Except she's told me to cut my hair regularly and wear decent clothes when I come on public functions. Whatever suggestions we have for IPL as franchise owners, there is an open forum where all of us go and discuss. कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है, हम एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं. अभी भी हम कर रहे थे सब बाहर बैठ के, टीम मेंबर्स एक दूसरे से बात करते हैं, टीम ओनर्स. सो आई थिंक ये चलते चलते जम चुकी है, बहुत अच्छी है. एंड बिफोर द रिलीज ऑफ IPL 5, आई थिंक please, with due respect to you and everyone who thinks that, I think it's a little too early to start saying uska ab wo passion kam ho gaya hai, uski viewership kam ho gayi. I don't think so. If you see the figures of last year and the year before that and the year they've done well, there is nothing to be assumed that this year the figures are going to be any less. And yes, it's important for the business, it's important for the entertainment, it's important for cricket actually and the league. I will again say this, and I can even speak on behalf of Juhi, and she can second me. Both of us have had this desire because, see, we are good at certain other things. We are good at emotions and passion. That's why we are actors. And we truly, till now, believe in that aspect. So, on the right side of the ring, you have the passion and the emotion. On the left side of the ring in black suits is the business.
These are the guys we look for numbers. These are the guys we look for the smiles and the tears in this team. So I have no other agenda for this team. I think Juhi, our children, we have no other agenda. We want to just go and play the game in the spirit of the game. And I'm not taking it away from the fact that Jay and Venki don't feel so.